बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल मजीद एकेडमी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्लास 9th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके एमसीक्यूज। ये वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस बोर्ड के पेपर में काफ़ी मरतबा पूछे गए हैं। तमाम बोर्ड्स में काफ़ी मरतबा इनको रिपीट किया गया। ओके, वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे जो पेपर्स हैं वो यहीं पे आपको मिलेंगे। ओके, चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की जानब। ये सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 1 है, उसके एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन सेम प्लेस एट सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, एक ही स्पीशीज़ के अंदर जो एक वक्त में एक ही जगह पर पाए जाए उसको पॉपुलेशन कहते हैं। इफ़ अ साइंटिस्ट स्टडिंग द मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसोल इन जीन इन बैक्टीरिया, तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में ले जाते होते हैं। विच ऑफ दीज मेजर बायोएलिमेंट्स इज इन हाईएस्ट परसेंटेज, ऑक्सीजन की होती है 65%। विच ऑफ दीज ग्रुप्स इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशन, इसको फंजाई का नाम दिया जाता है। ये फंजाई वाले होते हैं एब्जॉर्प्टिव। Similar cells organized into groups and performing same function tissues. Which of these tissue also makes the glandular tissue? इसको epithelial tissue का नाम देते हैं। Level of organization that is less definite in plant for organ system level है। What is true about volvox? Colonial यूकेरियोट हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हेन वी स्टडी द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एनिमल स्पीशीज ऑफ अ फॉरेस्ट, तो हम कम्युनिटी लेवल को स्टडी कर रहे होते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। वर्ड बायोलॉजी इसको यूनानी ज़बान से ड्राइव किया गया। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स पैलियोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Which branch of biology deals with the study of form and structure? Morphology. Scientific study of animal zoology. It deals with the art of gardening, horticulture. Transplantation of kidney is an example of surgery. Who is honored as the founder of medicine? ये है बोलिसिना। Al Qanun fi Tib is written by बोलिसिना. The first Muslim scientist who studied animal in detail is इसका है जी अब्दुल मालिक अस्माई। Next है, number of elements occurred in nature is 92. Naturally occurred bioelements are 16. Which is an example of bioelement? Carbonic bioelement है। Which one is macromolecule? इसका example protein है। Which example is micromolecule? इसका example glucose है। Human population in Pakistan in 2010 was 173.5 million. Okay, next is the part of earth inhabited by organisms community is called biosphere. The reproductive organ of plant is flower होता है ये। Which one is unicellular? Euglena. Which one is an example of multicellular organism? इसमें frog है, ठीक है। उसके बाद इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं चंद एक। डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर से क्या मरद है, इसका ताल्लुक एग्रीकल्चर से कैसे बनता है। व्हाट आर पैरासाइट्स, डिफाइन पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स क्या है, पैरासाइटोलॉजी की तारीफ करें। डिफाइन टैक्सोनॉमी, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, डिफाइन जेनेटिक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। राइट नेम्स ऑफ एनी 4 कैरियर्स इन बायोलॉजी। व्हाट इज मीन बाय बायोइकोनॉमिक्स। व्हाट इज मीन बाय मेडिसिन और सर्जरी। राइट नेम्स ऑफ मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज of nowadays. Describe the services of Polycina in biology. Write names of famous books of Jabir bin Hayyan. Write the levels of organization in order. Define bioelements and give an example. Write names of 6 important bioelements. What are micro and macromolecules? What is community level? Give an example. Define population. Give an example. Define community and give an example. Differentiate between population and community. Define species and give an example. What is meant by biosphere level? Biosphere level से क्या मुराद है। Differentiate between tissue and organ. Compare the cell level and tissue level. Cell level और tissue level को मुआवजना कीजिए। What is organ system level? Define colonial organization and give an example. Colonial organization की तारीफ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। What is meant by unicellular organism? Give example. Differentiate between vegetative and reproductive organs. Write the scientific names of mustard plant. उसके बाद इसी चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो काफ़ी मरतबा पूछे गए हैं। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज। बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से ताल्लुक वाज़ह कीजिए। एक्सप्लेन एनी 5 कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी से मुंसलिक को इसे 5 पेशों की वजाहत कीजिए। एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर लेवल एंड टिश्यू लेवल। मॉलिक्यूलर और टिश्यू लेवल की वजाहत कीजिए। एक्सप्लेन द ऑर्गेनिज्म लेवल की वजाहत कीजिए। एक्सप्लेन पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल की वजाहत कीजिए।
उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2। इसके इंपॉर्टेंट MCQ हैं। आर बायोलॉजिस्ट यूजेस डैश सेंसेस इन ऑब्जर्वेशन 5 विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट है द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज, इसका है एक्सपेरिमेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट MCQ है। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। डिडक्शंस आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस आर डिडक्शन। एट विच पॉइंट इज द बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज रीजनिंग during data organization. 1 liter of ethanol weighs 789 gram, which is responsible for spreading malaria. Plasmodium है. This mosquito spreads dengue fever. Aedes mosquito है. Malaria in sparrows is transmitted by Culex mosquito. Which plant bark was used to cure malaria? It's cinchona. Which plant bark contains quinine? Quina. What was the only effective remedy for malaria from 17th to 20th century? It's what was the only effective remedy for malaria from 17th to 20th century? It is mentioned as malaria. 17वीं सदी से 20वीं सदी तक किस बीमारी का वाहिद इलाज कौन था? मलेरिया। For treatment of malaria, A.F.A. King listed observation in 1883. Ronald Ross deductive conductive experiments in 1880. Plasmodium is the cause of malaria. This statement is a hypothesis. The hypothesis that often tested and never rejected becomes theory. ठीक है। उसके बाद इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज मीन बाय साइंटिफिक मेथड, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड हैं, डिफाइन ऑब्जर्वेशन, हाउ आर मेनी टाइप्स ऑफ इट। इसकी दो टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। व्हाट आर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, गिव एग्जांपल। व्हाट आर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, गिव एग्जांपल। डिफाइन हाइपोथेसिस। How is the hypothesis formed? Give 2 characteristics of a good hypothesis. What is meant by deductions? Differentiate between deduction and theory. What is meant by incubation period? Next, what 4 important observations were made about malaria in late 19th century? 19वीं सदी के आखिर में मलेरिया के मतलब कौन से 4 अहम मुशाहदत किए गए? Write the names of mosquitoes that transmit malaria and dengue in humans. How is Aedes mosquito transmit dengue fever? What is meant by law? What is theory? What is the difference between theory and law? How is the data organized? Data को किस तरह तरतीब दिया जाता है? Define ratio and give an example. Define proportion and give an example. What is mean by bioinformatics? उसके बाद है मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन यार पंजाब। ये वैसे इस चैप्टर में से आते नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन, मगर फिर भी अगर आ जाएँ तो ये 4-5 क्वेश्चन है यही पूछे जाएंगे। ठीक है। एक्सप्लेन एनी 5 स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। व्हाट इज मीन बाय हाइपोथेसिस, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सप्लेन थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। एक्सप्लेन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज मीन बाय डेटा एनालिसिस। बाय द वे इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को आई थिंक आएगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है। इसका वारिसेस आर असाइंड टू द किंगडम, नन ऑफ दिस। अ रिलेटिव ग्रुप ऑफ जनरा मेक फैमिली। इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स? ओनली प्रोटिस्टा। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट लेटर इज जेनस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम? ऑप्शन ए, इटैलिक्स में लिखा है। नेक्स्ट इज सर्टेन ऑर्गेनिज्म इन यूनिसेलुलर अडेप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये प्लांटी में है। When the last number of particle species dies, it becomes extinct, यानी पैदा हो जाती हैं। In which season hover bustard migrates to Pakistan? In winter. Biodiversity means variety of species. How many kinds of organism inhabited on Earth? 10 million, 1 करोड़। Biodiversity is richest in tropics. The basic unit of classification is species. Next is what is the order of human according to classification? Primates. इंसान का order primate है। A genus is a group of related species. An infertile animal is mule. The classification of organism is studied in taxonomy. According to simple classification, class of human is Mammalia, which is the largest taxon in biological classification kingdom. Scientific name of human, Homo sapiens. Homo sapiens. Carlos Linnaeus divided nature into 3 kingdoms. Which group's members are observed to be in nature? Fungi. Who introduced 5 kingdom system? Robert Whittaker. Types of kingdom Protista are 3. Bacteria are assigned to which kingdom? Monera. The common example of kingdom fungi is mushrooms. Funds are assigned to plantae kingdom. Prions are composed of proteins. Viroids are composed of RNA. Scientific name of onion is Allium cepa. Scientific name of host crow is Corvus splendens. Next, eucalyptus plants were imported from Australia. Extinct species in Pakistan is swamp deer. Swamp here. Today, around dash million people live on Earth. 700. How many people are added to Earth's population each minute? 180. Starfish eats mussels.
Then national animal Pakistan is Markhor. National bird Pakistan Chakor Partridge. Himalayan Jungle Project was started in 1991. इसके important short question है, how are taxonomy and systematics related? Differentiate between term extinct and endangered. Define biodiversity. Importance of biodiversity. Difference between flora and fauna. What is meant by taxa? Name any one taxa. Define species. Differentiate between class and order. Write the scientific name of human and pea plant. What is meant by classification? Next, I describe two works of Carlos Linnaeus. Differentiate between autotrophs and heterotrophs. Write names of all kingdoms of five kingdom system. Write two characteristics of kingdom Monera. State reasons why viruses are not assigned to any kingdom in five kingdom classification system. यानी वजह बताए viruses को classification system से बाहर क्यों रखा जाता है. How are many types of protists? Write names of any two decomposers. Write two characteristics of kingdom fungi. What is meant by virides? Difference between prions and virides. Define binomial nomenclature. Why binomial nomenclature is used. Write the scientific names of onion and house crow. Scientific names of human and onion. What is endangered species? Write names of any two endangered species in Pakistan. What are extinct species? Give example. Define deforestation, causes of deforestation, causes of loss in biodiversity. What do you know about Hobara bustard? What do you know about Indus dolphin? What is national bird of Pakistan? What is national animal of Pakistan? इसके मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पहला है, एक्सप्लेन द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन कीपिंग इन व्यू इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. क्लासिफिकेशन के मकसद और उसूलों की वजाहत करें. डिस्क्राइब द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायनोमिनक्लेचर. बायनोमियल नोमेनक्लेचर के मकसद और असूल बताइए. एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी पर इंसान के असरात हैं. काजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. जंगलात के खात्मे के वजूहात और इसके असरात. स्पीशीज इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. एक्सप्लेन. क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई स्पीशीज है, वजाहत कीजिए. राइट डाउन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई की खसूसियत बताइए. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी एनिमेलिया. किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया की खसूसियात हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर है. बायनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत. एनी 5 स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई से 5 इक़दाम. डिफाइन इंडेंजर्ड स्पीशीज़. एक्सप्लेन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान. इंडेंजर्ड स्पीशीज़ से क्या मुराद है? पाकिस्तान में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की वजाहत कीजिए. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4. There are dash micrometers in millimeter thousand. Which of these material is not component of the plasma membrane? DNA. Cell wall are found in these organisms except animals. The dash, the cellulose is the major component of plant cells. Next is the nucleus is the membrane enclosed structure in eukaryotic cell that contain DNA. Ribosomes are constructed in nucleolus. Rough endoplasmic reticulum is the area in which cell form proteins. Smooth endoplasmic reticulum is the area in which lipids are prepared. Mitochondria function in cellular respiration. The thin extension of inner mitochondrial membrane is known as crystry. The chloroplast function in photosynthesis. Which of these cellular organisms have their own DNA? Mitochondria, chloroplast and nucleus. I think इसका right option ये है, all of these. इनका अपना डीएनए होता है. क्लोरोप्लास्ट का भी होता है, न्यूक्लियस का भी होता है. फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड इन 1595. हु डेवलप्ड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप? स्क्यार्स जेनसन. यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी. मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप 1500x. रिजोल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप 0.2 माइक्रोमीटर. A photograph taken through microscope is known as micrograph. Resolution of human eye is 0.1 millimeter. Who studied animal tissues? Theodor Schwann. Who discovered the nucleus in plant cell? Robert Brown. When was the nucleus discovered in plant cell? 1831. Glycolysis occurs in cytoplasm. Human body is composed of dash types of cells, 200. Which one is present in cell wall of fungi? Chitin. The most common chemical found in wood, lignin. Fluid mosaic model relates to cell membrane. Cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. Elasticity in cell membrane is due to lipids. Microtubules are composed of tubulin. Cisternae relates to Golgi apparatus. Who discovered lysosomes? Rene Dadov. Chromosomes are composed of DNA and protein. Dash are the sites of protein synthesis. Ribosomes, organelle which produces energy. Mitochondria, these are the sites of aerobic respiration. Mitochondria. Stroma is found in chloroplast. The stack of thylakoid is known as granum. Golgi was awarded Nobel Prize in 1906. The solution that has relatively more solute, hypertonic, and a solution has relatively less solute, hypotonic.
movement of molecules from area of low concentration to high concentration gradient, active transport, gas exchange in gills and lungs occurs by diffusion. Which cells are responsible for coordination? Nerve cells. Cardiac muscles are present in heart. What kind of muscles are responsible for wings flapping? Skeletal muscles. The tissue which are made up of single type of cells are simple tissues. The tissue which have the ability to divide are meristematic tissues. Ground tissues are made up of parenchyma. नेक्स्ट इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. स्टेट सेल थ्योरी, व्हाट द फंक्शंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, what is meant by hypertonic and hypotonic solution, what is meant by resolving power of microscope, difference between magnification and resolution, what is cell wall, in which organism is it found, difference between primary cell wall and secondary cell wall, what is meant by plasmodesmata, what is fluid mosaic model, give two functions of cell membrane, difference between cell wall and cell membrane, write the plasma membrane is called semi-permeable membrane, write two functions of cytoplasm, what is cytoskeleton, differentiate between crista and cisternae, where are chromosomes found and which material are they composed of, what is the role of nucleus in cell, what is nuclear envelope, define ribosomes, give their importance, where ribosomes are formed, their functions, functions of mitochondria, define plastids, name its types, chloroplast, chromoplast, leucoplast, describe the functions of leucoplast and chloroplast, functions of thylakoids, difference between thylakoids and stroma, what is endoplasmic reticulum, name its two types, functions of smooth endoplasmic reticulum, functions of lysosomes, what are centrioles, where are centrioles formed, give their function, functions of centrosomes, what is exocytosis, differentiate between prokaryotes and eukaryotes, define diffusion, facilitate diffusion, osmosis, difference between diffusion and osmosis, define Degler pressure, filtration, pinocytes, sodium potassium pump, endocytosis and its types, difference between phagocytosis and pinocytosis, what is meant by exocytosis, difference between endocytosis and exocytosis, active transport, norm for any kinds of epithelial, difference between simple tissue and compound tissue, write names of two kinds of simple tissue, what are sclerenchyma tissues, intercalary meristems, meristematic tissues. उसके बाद इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स. नेक्स्ट एक्सप्लेन साइटोप्लाज्म, डिस्क्राइब द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन सेल, what are ribosomes, write their functions, what are plastids, write down their functions, what is endoplasmic reticulum, explain its types, write any 5 differences between prokaryotic and eukaryotic cell, explain the relationship between cell function and structure, explain active transport, what are compound tissues, explain xylem and phloem tissues. उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. सेल साइकिल के किस मरहला में हर क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है, वो है एस फेज. सेल साइकिल के किस मरहले में स्पिंडल फाइबर बनते हैं, वो है प्रोफेज. सेल साइकिल के किस मरहले में क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन, वो G1 फेज के लिए एंजाइम तैयार हो रहे होते हैं, वो G1 फेज में. नेक्स्ट है सेल डिवीजन का कौन सा मरहला जानवर पौधे मुख्तलिफ होता है, वो साइटोकाइनेसिस है. नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाले का नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स है, ठीक है. ओके, मियोसिस के दौरान होने वाला कौन सा अमल इसे माइटोसिस से मुनफरिद करता है, वह होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़े बनाना है. इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल मोस्ट सेल्स स्पेंड देयर लाइव्स, इंटरफेस, ठीक है. नेक्स्ट ये जो बड़े स्टेटमेंट ये ज़रा कम आते होते हैं बोर्ड में भी, बट आप इनको भी एक बार देख लीजिएगा, मैंने आपके सामने रखे हुए. नेक्स्ट 11, द सेल्स ऑफ डैश डू नॉट इंटर जी नॉट सेल, एपिथेलियल, who introduced mitosis, Walter Fleming. In prokaryote cells, cell division occurs in a way called binary fission. Phases of mitosis are 4: prophase, metaphase, anaphase, telophase. Next, at what stage of mitosis does the cell nuclear membrane break? Prophase. In this phase, chromosomes arrange themselves along the equator of metaphase. The division of cytoplasm, cytokinesis. Division of nucleus, karyokinesis. Process of regeneration is found in C star. C star regenerates its lost arm through mitosis. The tumors which remain in their original location are benign. Process of forming new tumor is called metastasis. Errors in control of mitosis may be cause cancer. The word meiosis, Greek word meaning to make smaller. Who discovered the meiosis? Oscar Hartwig. During meiosis, a cell divides into 4 daughter cells. At what stage does crossing over occur? During prophase 1. Accidental death of cell and living tissue is necrosis.
उसके बाद इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेल साइकिल, डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स, डिस्क्राइब एस फेज इन सेल साइकिल, व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, डिफाइन माइटोसिस, इन विच सेल डज इट अकर, डिफाइन माइटोटिक स्पिंडल, हाउ इज द मेटाफेज प्लेट फॉर्म्ड, name the phase of mitosis, define prokaryotes, is karyokinesis and cytokinesis, name 4 phases of karyokinesis, what is meant by phragmoplast, give the importance of mitosis, what is meant by alternation of generation, define regeneration, give an example, what is tumor, differentiate between benign and malignant tumors, what is meant by metastasis, define meiosis, when and who discovered the meiosis, differentiate between meiosis and mitosis, differentiate between diploid and haploid cells, difference between somatic and germline cells, process of synapses, crossing over, function of chiasmata in crossing over, difference between disjunction and non-disjunction, what is necrosis, causes of necrosis, define apoptosis, write 2 advantages of apoptosis, differentiate between necrosis and apoptosis. इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वैसे तो स्कीम के मुताबिक ये कि इसमें से क्वेश्चन नहीं है ना, बट फिर भी आप ये कर लीजिएगा, हो आ भी सकता है इसमें से. ओके, डिफाइन माइटोसिस, एक्सप्लेन साइटोकिनेसिस, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, define meiosis, describe any 2 phases of meiosis 1, explain meiosis 2, describe the significance of meiosis, write down 4 differences between mitosis and meiosis, what is apoptosis, explain it, next explain necrosis. उसके बाद है चैप्टर नंबर 6, इसके इंपॉर्टेंट पहले MCQs आ जाते हैं. To what category of molecule do enzymes belong? These are proteins. Who first used term enzyme? William Cohn. The term metabolism is derived from the Greek word meaning changes. The concept of metabolism was first of all given by Ibn Nafis. The molecule at which enzyme act is substrate. Next, by chemical reaction में बड़े molecule बनाए जाते हैं anabolism, जिसमें कैटेगराइज प्रोटीन्स की वो किस्म जो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेगराइज करती है वो एंजाइम्स हैं. Almost all enzymes are proteins. Which enzyme is used to remove protein stains? Protease. Used to dishwashing, amylase. Pepsin enzymes works in stomach. In which medium does enzyme trypsin work? Alkaline. Optimum temperature for human 37 degrees Celsius. Induced fit model was introduced in 1958. In which year lock and key model proposed? 1894. Who proposed lock and key model? Emil Fischer. Who proposed induced fit model? Daniel Koshland. Starch is broken down by enzyme called amylase. Lipase enzyme acts on lipids. Scientific specificity of enzyme is determined by shapes of active site. इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में रहता है, डिफाइन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट, डिफरेंस बिटवीन एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, वाटर बायोकैटलिस्ट, डिफाइन एंजाइम, गिव देयर फंक्शन. Any 2 characteristics of enzymes, advantages of biocatalyst, what is meant by intracellular and extracellular enzyme, what is meant by metabolism, difference between catabolism and anabolism, define prosthetic group, write the names of 2 important vitamins that act as coenzymes, write 2 uses of enzymes, uses of enzyme in biological detergent, define coenzyme, give example, what factor affect the reaction speed of enzyme, what is meant by optimum temperature, what is meant by denaturation of enzyme, define optimum pH, describe the function of pepsin in stomach, write down equation for the mechanism of enzyme action, state lock and key model, induced fit model, function of amylase and lipase. उसके बाद इस चैप्टर का जो important long question इसमें write down 5 characteristics of enzymes, define enzymes, write their 4 uses, describe the factors affecting the speed of enzyme action. उसके बाद स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम भी 1-2 बार बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन. और नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, बायो एनर्जेटिक्स. ओके, फर्स्ट MCQ, इन विच द स्टेप्स ऑफ रिस्पिरेशन CO2 इज प्रोड्यूस, Krebs cycle. Oxygen takes part in aerobic respiration in electron transport chain. From which bonds of ATP molecule energy is taken? P.P इनके phosphate bond. In which component of cells chlorophyll is present? Thylakoid. Which of these can enter into Krebs cycle? Acetyl coenzyme A. How many molecules CO2 produced? 3 during Krebs cycle. In which of these metabolic processes oxidation as well as reduction molecules occur? Both respiration and photosynthesis. क्लोरोफिल पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की रोशनी को जज़ब करते हैं? रेड एंड ब्लू. Who discovered ATP? Carl Lohmann. ATP was discovered in 1929. 1 mole of ATP releases 7.3 kilocalories of energy. Major energy currency of cell is ATP. Each ATP molecule has dash subunits 3. The loss of electron from an atom is called oxidation, which is evolved by a byproduct in process of photosynthesis, oxygen.
The details of dark reaction were discovered by Mayer and Kelvin. The dark reaction takes place in the stroma of the chloroplast. The whole series of light reaction is called Z-scheme. Chloroplast is found in which part of leaf? Thylakoids. Only about 1% light falling on the surface is absorptive. Stromata covers only 1 to 2% of leaf surface. Glycolysis occurs in cytoplasm. Important short questions are: define ATP. Structure of ATP. What is meant by bioenergetics? Meant by oxidation and reduction. Define photosynthesis and their equation. Necessary condition for photosynthesis. Products formed during photosynthesis. Abbreviation of FAD. Dark reactions. Meant by light reactions. Meant by photolysis of water. Role of chlorophyll in photosynthesis. What are pigments? How does amount of carbon dioxide affect the speed of photosynthesis? What is meant by limiting factor? Four limiting factors of photosynthesis: respiration and cellular respiration, aerobic respiration and its equation, anaerobic respiration. Difference between aerobic and anaerobic respiration. Define fermentation and its types. Alcoholic fermentation and its example. Meant by glycolysis, and where does this process take place? What is meant by Krebs cycle, electron transport chain, FAD and NAD. Difference between photosynthesis and respiration. मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन इसके जो हैं उसमें आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट इन फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर लाइट रिएक्शंस, राइट समरी ऑफ देयर इवेंट्स, define dark reaction, describe the summary of their events, explain the limiting factors in photosynthesis, explain aerobic and anaerobic respiration, define anaerobic respiration, its types, describe the importance of anaerobic respiration, write down mechanism of respiration, five difference between photosynthesis and respiration, difference between anaerobic and aerobic respiration. उसके बाद है सेकंड लास्ट चैप्टर, चैप्टर 9 न्यूट्रिशन. इसके इंपॉर्टेंट MCQ हैं. वो कौन से प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है जो जिस्म को जल्द ही काबिल इस्तेमाल एनर्जी मुहैया करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट है ये पेरिस्टालसिस. ठीक है, मसल्स की हरकत जो खुराक को डाइजेस्ट सिस्टम में निकलती है वो पेरिस्टालसिस है. वेयर आर विल लाइफ फॉर्म्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, अल्सर अकर्स इन all of these, esophagus, duodenum, stomach. Which group of enzymes breaks up starch and other carbohydrates? Amylase. Pancreas produces digestive enzyme, release them into duodenum. In stomach, pepsinogen is converted into pepsin. Hepatic portal vein carries blood from small intestine to liver. Which of these is not function of liver? Production of digestive enzymes. The disease of Kwashiorkor and marasmus may be due to protein energy malnutrition. Which food group is our body best source of energy? Fats, oils and sweets. Fats, oils and sweets. Process of breaking down large droplets of fat into small droplet is emulsification. Which is example of vitamin? Riboflavin. Example of micronutrient? Zinc. Example of macronutrient? Oxygen. Name of the disease caused by iron deficiency? Anemia. कौन सा मिनरल हड्डियों और दांतों की डेवलपमेंट इनके बका के लिए जरूरी है? कैल्शियम. स्कर्वी इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. विच वन इज वाटर सोल्यूबल? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. कार्बोहाइड्रेट contains 4 kilocalories per gram. 1 gram of protein contains 4 kilocalories. Which solution confirm the presence of proteins? Biuret solution. ये important है. 1 gram of lipids contain energy 9 kilocalories. The disease caused by protein deficiency is marasmus. It is caused by deficiency of iodine, goiter. Process of taking food into body's ingestion. Liver relates to digestive system. Process of grinding food is mastication. Product of gastric juice is HCl. Product of gastric juice. In adult human, esophagus is about 25 centimeter. Adult human liver weighs about 1.5 kilogram. Okay, इसके important short question है. Difference between macronutrient and micronutrient, major minerals and trace minerals, organic and inorganic fertilizers. What is meant by carbohydrates? Sources of lipids. Saturated fatty acids an example. Unsaturated fatty acids an example. Sources of protein है. Names of fat soluble vitamins, water soluble vitamins है, fat soluble vitamins और इनके examples. Main sources of vitamin C. What is scurvy and its symptoms? Names of disease caused by deficiency of vitamin D. What is night blindness? 4 sources of vitamin A. Diseases can calcium deficiency cause in humans. What diseases हैं? Role of iron in human body. Meant by dietary fiber, dehydration, malnutrition, types of malnutrition, protein energy malnutrition, marasmus and its diseases that occur. Symptoms and causes of Kwashiorkor. Minerals. Name any 2 diseases caused by mineral deficiency. What is goiter? Digestion, ingestion, assimilation, absorption, alimentary canal, mastication, peristalsis, gastric juice and their chemical composition. Function of HCl and pepsin in digestion. Villi and its function.
What is meant by sphincter and names of its types, process of churning, duodenum in the small intestine, appendix and its symptoms, functions of oral cavity, what is liver and its ways in adult human, two functions of liver, what is gallbladder, right, its function, what is diarrhea, its symptoms and causes, it is meant by ulcer and its symptoms, four causes of ulcer, major causes of constipation, difference between bolus and chyme, deficiency of vitamin A, how can the deficiency of vitamin A causes blindness. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके important long question. What are fertilizers and its types? Explain the carbohydrates and lipids, proteins and minerals, role of iron and calcium in human body, significance of vitamin A, define malnutrition and protein energy malnutrition, explain the diseases caused by deficiency of minerals, define malnutrition and its effects, functions of oral cavity, functions of small intestine, role of liver in human body, five functions of liver, write down symptoms and causes and treatment of diarrhea, symptom causes, treatment of constipation, what is ulcer, its symptom causes and treatment. उसके बाद आप लोगों का है लास्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट. इसके इंपॉर्टेंट ये MCQ हैं. Food is transported in the form of sucrose. Stomata close when guard cells lost water. नेक्स्ट जब फाइब्रोनोजिन ब्लड क्लॉट बनाती है तो खून से अलग हो जाती है और बाकी मानदा हिस्से को सीरम कहते होते हैं. विच इज़ करेक्ट अबाउट ह्यूमन रेड ब्लड सेल हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन. विच ऑफ दीज, इसका 120 डेज होता है. विच ऑफ दीज टिश्यू लेयर इज फाउंड इन ब्लड वेसल्स एंडोथीलियम. व्हेन डू द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट? ड्यूरिंग सिस्टोल. विच ऑफ दीज कंटेन deoxygenated blood? Pulmonary artery. Which of these chambers has the thickest walls? Its left ventricle. Exchange of material between blood and surrounding tissue is capillaries का काम है ये. Which of these are type of leukocytes? All of these. Monocytes, eosinophils, lymphocytes, basophils, ये सारी इसी के examples हैं. Function of human blood. All of these हैं इसका भी. Valves to prevent backflow are found in veins. Plasma is made up of water and all of these metabolites, salts, proteins, ions and waste materials. Which of these are responsible for blood clotting? Platelets. A patient with blood group A can be the blood donor who has blood group A or O. Death of heart tissue is called. It is known as myocardial infarction. It controls opening and closing of stomata potassium. Outside the conducting tissue there is narrow layer of thin walled cells called pericycle. A single layer of cells surround the pericycle is endodermis. The force that carries water through the xylem into plant is transpiration pull. Temperature at which transpiration stops 40 to 45 degrees Celsius. Which part of plant is responsible for transport of water is xylem. It is responsible for transport of food through plant, which is phloem. Every adult body has dash about blood 5 liters. Average lifespan of RBC is 120 days. Average lifespan of blood platelets is 7 to 8 days. Normal pH of blood is 7.4. Blood cells involved in blood clotting is platelets. Plasma protein which maintains the water balance is albumin. Who introduced ABO blood group system? Karl and Steiner. Which blood group is universal donor? O. 1 liter of ethanol weighs about 789 gram. ये second chapter में से. The weight of normal human adult heart is 250 to 350 gram. A healthy human's heart beat per minute is 75. Woman's heart. Who discovered the pumping action of heart? William Harvey. Blood vessels that carry blood away from the heart is arteries. Smallest blood vessels are capillaries. World Heart Day held on 28th of September. Myocardium means heart muscles. Okay, उसके बाद next इसके important short question है. What are lenticels and where they are found in plants? Next is role of potassium ions in opening and closing of stomata. Define cohesion tension theory. Two main types of white blood cells and how they differ. Granulocytes and agranulocytes हैं. You see pus at the site of infection on your skin. How is it formed? ये dead WBCs होते हैं. Define the term systole and diastole. Functions of xylem and phloem tissues. Functions of root and plant. Function of root hairs. Define transpiration. Why transpiration important for plant? Define Derger. Stomatal transpiration. On what does the opening and closing stomata depend? Name 4 factors that affect transpiration. Write 2 effects of temperature on speed of transpiration. What is meant by transpirational pull? What is meant by pressure flow mechanism? Why systems are responsible for transport in human? What systems? What is meant by a closed circulatory system? In which plant it is present? What is blood plasma? Name any 2 plasma proteins. What is fibrinogen and its function? What are RBCs and their number in human?
How is performed? Number of WBCs in human body, their function. Two major types of WBCs, function of WBCs and platelets. What is leukemia and its symptom? Thalassemia and its treatment. What is meant by blood group system? Define antigens. What is meant by RH blood group system? Difference between universal donor and universal recipient. Why is blood group O called universal donor? Write the weight and size of heart in normal adult human. Different chambers of human heart, pericardial fluid and its function, cardiac cycle, लब डब साउंड के बारे में बताना है. Human heart and why is human heart called double pump? Differentiate between bicuspid and tricuspid valve. It is meant by systematic circulation, pulmonary circulation, arteries and veins. Vascular surgery है, arteriosclerosis and its reason. Differentiate between thrombus and embolus. Atherosclerosis and arteriosclerosis. What is meant by angina pectoris? Angioplasty and high bypass surgery में difference. Symptoms of myocardial infarction. उसके बाद इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड हाउ एंड रिलेट इट विद सेल सरफेस एंड स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग. नेक्स्ट, डिफाइन ट्रांसपायरेशन, डिस्क्राइब फैक्टर दैट इफेक्ट स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन. इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन पुल है और इसके रीजंस क्या हैं क्रिएट होने के. डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म और ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में कैसे रोल प्ले करती है. लिस्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है. राइट अ नोट ऑन ब्लड प्लाज्मा. व्हाट WBCs, एक्सप्लेन देयर टाइप्स हैं. Symptoms and signs, causes and treatment of leukemia and thalassemia. Write a note on heartbeat. Characteristics of arteries हैं. Difference between arteries and capillaries. Difference between arteries and veins हैं. Write 5 difference between capillaries and veins. Explain the arterial system. Explain venous system. Explain atherosclerosis and arteriosclerosis. And the last one is state the causes, treatment and prevention of myocardial infarction. Myocardial infarction के वजूहात, इलाज, बचाव, तहरीर करें. Very important question. तो ये थे हमारे पास मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों के क्लास 9th के बायोलॉजी के. इनके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा. इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्रमोट करें. हम आप लोगों के लिए से इम्पोर्टेंट वीडियोज़ रिसर्च करके बनाते हैं, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो सर्च करके लेके आते हैं. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.